meaning of a company. Like we need to go through like what is a company. This is something not new for you. Just a revision of class 11. A company is an artificial person created by law, having a separate legal entity and perpetual succession and a common seal, right? So some of the other way, like in the meaning of a company, its features are described. It's an artificial person created by law and can be ended by law only, can be winded up by law only. It has its own separate entity. It has the perpetual succession. It has a common seal. So these are what other features are there. Okay, we know like now incorporation, like incorporation of a company can be done by the companies under the Companies Act 2013, right? And the law considers it as an artificial legal person. Before this Companies Act 2013, there was another act in the country, like that was 1956, which is well known to all of us. But now we need to learn about 2013 Act, and we already have done that in a book like third book, Financial Statements में कर चुके हैं. Separate legal entity. Okay, तो separate legal entity में ये होता है कि like it is distinct from its members. The members of the company will be the shareholders, the owners, right? So it is different from its owners. Okay, that is what is a separate legal entity. And because of this, what can happen, like कि क्या उनको legal rights क्या मिल जाते हैं, तो they can enter into, the company can enter into the contracts, issue share capital, conduct the business, sue anybody, and also be sued, right? So these are all the features because of the separate legal entity. Perpetual existence. Okay, so that simply means that it is not affected. The company is not affected due to bankruptcy, death, or lunacy of its members or shareholders. Okay, the members may join, may leave, that's fine, but the company will exist, right? The perpetual existence. Limited liability. Yes, that's a most important feature apart, like unlike partnership, correct? Partnership, we have seen that key partners do have a unlimited liability, correct? And over here it is limited liability. Limited liability mean like every shareholder is liable to pay to company uh, to the extent of the shares held by the member, held by the shareholder. We can see the example over here. Mohan holds 100 shares of a company of a face value of rupees 10. अगर 10 रुपये का शेयर है एंड 100 शेयर्स है मोहन के पास, तो ही इज लायबल फॉर रुपीज 1000 ओनली, करेक्ट, नॉट बियॉन्ड दैट. बट एंड ये भी है कि लाइक यस, रुपीज 7 is paid up, so he can be called upon to pay rupees 3 per share. Out of 7, suppose company ने पहले 7 call rupee out of 10, right? Company has called 7 rupees. That's fine. The 7 Mohan has paid. Now, what is Mohan's remaining liability? So you are told that he will be called upon. He can be called upon to pay rupees 3 per share only. Okay, so that is what is about the limited liability. Transferability of shares. The shares are freely transferable, correct? We all know that. Many of your parents also might be dealing in the stock market, so easily transferable, purchase sale easily ho jata hai, correct? Common seal. Yes, every company, okay, because it's an artificial person, so all the documents prepared by the directors must also bear the seal of the company along with their signatures. Separation of ownership from the management. The management of the company is done by board of directors. Okay, elected representatives होते हैं of the shareholders, so they are board of directors. So board of directors do manage and owners are the shareholders. Okay, so board of directors do manage the company on behalf of the shareholders, correct? Now, what is a share? Okay, share is something like you are told that the total capital of the company. Okay, what are the total capital of the company is there, that is divided into certain indivisible units of a fixed amount. छोटे छोटे units में उसको divide कर देते हैं. And each such small unit is termed as a share. And the capital raised by the issue of shares is known as share capital. And the person who holds the shares in their names are known as shareholders. Okay, I repeat, the total capital of the company is divided into small equal units. And those small equal units are called, or is called, a share. And the capital that is raised by the company by the issue of shares is a share capital. And the person who holds the shares in their names are the shareholders. What is the nature of a share? The nature of the share
you're told that it's a movable property, transferable in the manner provided with articles. They can be easily bought, sold, hypothecated, okay, even bequeathed. Like it is, the meaning is to leave the shares by will. Okay, so all these things are possible. So that's why it is termed as movable property. Next is, yes, this is very interesting, very easy going for you people. The types of the classes of the kinds of shares. We all know that there are two types of shares, right? Preference shares and equity shares. Okay. तो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बोले जाते हैं, लाइक व्हाई इज दिस वर्ड प्रेफरेंस अटैच्ड टू द वर्ड शेयर? बिकॉज दे हैव टू स्पेशल राइट्स विद देम. ओके, कौन से राइट्स हैं? प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल. मतलब ये है कि बिफोर वी पे एनीथिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, the amount of dividend is paid to preference shareholders. In the same way, at the time of liquidation of the company or winding up of the company, before any amount is paid to equity shareholders, the amount is paid to preference shareholders. So these are two preferential rights of preference shareholders over equity shareholders. Also, like one of the category of the preference shares, right? They also carry a very special right to participate in the excess profit after making payment of dividend to equity shareholders at a specified rate, right? And right to participate in the surplus amount left after making payment to equity shareholders at the time of liquidation. ये एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी का शेयर्स होते हैं, दैट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. Right to participate in the excess profit after making the payment of dividend to equity shareholders at a specified rate, and right to participate in the surplus amount left after making the payment to equity shareholders at the time of liquidation. बहुत ही rare feature है preference shareholders का. Now, types of preference shares: cumulative preference shares, non-cumulative, participating, non-participating, redeemable, irredeemable, and convertible and non-convertible. इक्विटी शेयर्स, अच्छा प्रेफरेंस को मैंने जैसे बताया कि लाइक दे आर द क्रेडिटर्स, तो इसीलिए उनका कोई भी ओनरशिप राइट उनको मिलता नहीं है. बट यस, क्यूमुलेटिव, यस बेटा, व्हाई नॉट. एक सेकेंड, अ डाउट हैज बीन रेज्ड फॉर क्यूमुलेटिव. लेट अस रीड द वर्ड्स, है ना? ओके. Cumulative preference shares are those preference shares which carry right to receive the payment of areas of dividend before the payment of dividend to equity shareholders. ठीक है, डिविडेंड है. डिविडेंड का बेसिक मीनिंग ये होता है कि दिस विल बी पेड ओनली इफ प्रॉफिट इज देयर. ठीक है, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा. दैट इज एज सिंपल एज दैट, करेक्ट? बट ये जो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, they do have a right to receive the payment of arrears of dividend. Arrears is outstanding. आगे meaning लिखा हुआ है. It means that if a company is either running into losses or is having insufficient profit to make the payment of dividend to preference shareholders, the dividend will continue to accumulate and will be paid in the year in which the company has earned sufficient profits. ठीक है? So एक साल डिविडेंड नहीं मिला, नी नॉट टू वरी. सेकेंड ईयर में 2 साल का डिविडेंड मिलेगा, करेक्ट? 2 साल नहीं मिला तो ठीक है, नो नीड टू वरी, थर्ड ईयर में मिलेगा. सो दैट इज व्हाट इज अबाउट द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटी. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स बेसिकली. ठीक है, बट ये है कि दे डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को था. They are paid dividend only after the dividend is paid to preference shareholders. Even regard the payment of their capital also, they will be paid at the time of winding up only if any amount is left out after making payment to preference shareholders. And that's why the another name for equity share capital is risk capital. जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो मतलब उनको पता है आज मैंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, कल को कंपनी डूब भी जाती है तो हमारा पैसा गया. ओके, वो गया राम खाते वाला पैसा है, तो इसीलिए वो रिस्की है. प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट दैट रिस्की. वो भी रिस्की हैं बट नॉट दैट रिस्की एज इक्विटी शेयर्स आर, करेक्ट? मूविंग अहेड. ओके, वी हैव डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. ये बहुत सिंपल होगा, इजी गोइंग होगा. रेट ऑफ डिविडेंड. द रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स रहता है, बट इक्विटी में इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, इट वेरीज, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट्स, करेक्ट?
Preferential right to dividend, we know like preference shares को मिलता है. Equity do not carry such preferential right. Redemption, preference shares can be redeemed. Okay, redeemable preference shares होंगे तो इक्विटी जनरली रिडीम नहीं होते, बट हाँ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इज पॉसिबल, जो हमने कैश फ्लो में भी डिस्कस किया था कि अगर आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं कि लाइक बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, कंपनी कैन बायबैक इट्स ओन इक्विटी शेयर्स, तो यस दैट इज वन वे ऑफ रिडम्पशन ओनली, बट इन जनरल इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीम्ड, करेक्ट, और वो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ओनली, वो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ओनली वो उनको पैसा वापस मिलता है. कन्वर्टिबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड if the terms provide, equity shares are not convertible. Voting right, preference shares are the creditors, so no voting right, but equity are the owners, so they do carry the voting rights. Areas of dividend, preference shareholders में तब मिलेगा when they are a particular category, that is cumulative preference shares, बाकियों को तो नहीं मिलेगा. एंड इक्विटी में एरियस भूल जाओ, डिविडेंड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है. राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, तो जो क्रेडिटर्स हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बेसिकली दे डू नॉट हैव दिस राइट, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स डू हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. यहाँ तक ये बेसिक था कि ये सब जो हम पढ़ चुके हैं, तो दिस इज व्हाट यू हैव रेड इन क्लास 11 आल्सो, राइट. यहाँ से अब आएगा जो क्लास 12 का है, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. Every company limited requires capital to meet its financial requirements. We know that the company raises its capital by issuing of shares, so it is called a share capital. अब types और classification of share capital, हम types of shares की बात नहीं करते हैं. अब ये जो part है, this is really very important. Authorized share capital. Authorized share capital is the maximum amount of share capital that can be raised by the company throughout the lifetime of the company. जब तक company exist करती है, तब तक इतना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रेज कर सकते हैं. दिस कैटेगरी ऑफ कैपिटल इज आल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑथोराइज्ड, ऑथोरिटी मिला हुआ है कंपनी को, तो जब आपने 11th में पढ़ा होगा ना, द like the different documents like which are to be registered with the registrar, right, तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आया होगा, उसमें कैपिटल क्लॉज आया होगा. ओके, तो कैपिटल क्लॉज के अंदर ये सारी चीजें मेंशन करते हैं. ओके, कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कि हाउ मच कंपनी वांट्स टू रेज द फंड्स थ्रू द इश्यू शेयर्स, तो ये हमेशा ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ह्यूज अमाउंट होता है, ह्यूज. एंड कंपनी जो शेयर्स इशू करते हैं, आपने अभी रिसेंटली भी कितने सारे कंपनीज का मतलब इशू आया हुआ है, आईपीओ आया हुआ है, तो आपने देखा भी होगा. So that IPO is hardly, like 2%, 5%, 10%. इससे ज्यादा कभी वो करते ही नहीं है. Okay, so इतना ज्यादा वो लोग अथॉरिटी ले लेते हैं, रजिस्टर के पास रजिस्टर करवा लेते हैं. Okay, next is issued share capital. अब ऑथोराइज डिसाइड करने के बाद अब कंपनी को जितना पैसा चाहिए एज ऑफ नाउ, ठीक है, तो उतना अमाउंट जो है वो मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं उतने अमाउंट के लिए, करेक्ट. So issued capital has to be a part of authorized capital, which is issued by the company for subscription. कौन सब्सक्राइब करेगा? कॉमन मैन. ठीक है, आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा, राइट. तो with the help of the prospectus, a prospectus serves the purpose of an invitation, an advertisement. Okay, it is issued by the company in general through different media, and in common, in general, like जो public है, तो they go through that. Whosoever the interested person is there, so they are going to send an application for the shares, correct. So this is what is the process. So issued share capital will be a part of authorized share capital, which is issued by the company for public subscription. It is a part of authorized capital. अब जब मैं part of authorized capital बोल रहा हूं, मतलब this amount of issued share capital cannot exceed authorized capital. It may be equal to or less than that. It cannot be more than that, correct. Next is subscribed share capital. Now when you talk about subscribed share capital, so this will be a part of issued share capital, issued capital which has been subscribed by the investors. मैंने बताया ना, इन जनरल जैसे पब्लिक ने अपना वो पढ़ा होगा, प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ने के बाद पब्लिक को लगा कि ठीक है, इट इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सो एंड सो कंपनी, तो they do send an application
they do subscribe for the shares. So this subscribed capital has to be a part of the issued capital which has been subscribed by the investors. अब मैं इसको इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 एग्जाम में ही मार्च 2020 में ही 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था. इन जनरल हमें पता होता है कि हाँ ऐसा सा होता है, लेकिन वर्ड्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ. 1 मार्क क्वेश्चन वाज देयर, राइट? Again the same point, it cannot exceed the issued capital. It can be equal to, but it cannot be more than issued capital, right? Next is called up share capital. Called up share capital is something like, जैसे वो मोहन वाला एग्जांपल पढ़ा था हमने, करेक्ट? कि 10 रुपये का शेयर है, 7 हैज बीन पेड, अब 3 रुपीज बाकी हैं. तो सेम थिंग ओवर हियर. सपोज द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 10. कंपनी कैन कॉल दैट 10 रुपीज इन वन लमसम अमाउंट, जैसे होता है कि 10 का 10 एक साथ ही कॉल कर लिया, या फिर द अमाउंट ऑफ 10 रुपीज कैन बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट एज वेल, करेक्ट? So if 10 rupees has been called by the company, to multiply by the number of shares issued, that is called up capital, correct? But out of 10, suppose company has called just 7 rupees, 7 rupees के call किया, तो 7 into the number of shares, that will be your called up capital, called up. Okay, so let us read this. Usually shareholders are asked to make the payment of shares in installments, जो बहुत पुरानी बातें हैं, प्रैक्टिकली आजकल इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. The portion of face value of share called by the company during the accounting year is called the called up capital. Okay, face value is 10. Out of that 7 call किया, multiply by number of shares, that will be your called up capital. Called up के बाद फिर आता है paid up capital. Paid up capital is something like maybe like जैसे मोहन एंड सोहन वगैरह हैं, उनके पास शेयर्स हैं, लेकिन आगे जो इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं तो दे डोंट हैव दैट अमाउंट, या कुछ रीजन है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंपनी टू इन्वेस्ट मोर अमाउंट, तो दे डोंट पे सम अमाउंट. ओके, मोहन सोहन राम श्याम ये सारे नाम आते रहेंगे, एक्स वाई ए बी, करेक्ट? सो इफ एनी अमाउंट इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट अनपेड अमाउंट हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप वैल्यू. कॉल किया हमने, सपोज 1 लाख का कॉल किया, मोहन ने 2000 पे नहीं किया, ठीक है, तो रिमेनिंग 98,000 तो मिला, सो दैट विल बी पेड अप कैपिटल. एंड द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, ओके, फ्रॉम मोहन और सोहन, राइट? तो दैट अमाउंट इज टर्म्ड एज कॉल्स इन एरियर्स. Okay, so what I'm supposed to do, this amount of calls in areas I'm going to deduct from called up capital to get paid up capital.